Chairman of Board of Trustees. Sir, what is the motto of today's meeting? We were invited today to attend the local RMC meeting, and our purpose was to see firsthand the wonderful project they are engaged into and to see how we can help them, support them, felicitate and funding. What was this project done in previous month? What we heard today is there's a continuation of housing project which they call the legacy projects. There were various job fairs, mass weddings, Project Farista, Ramzan rations, microfinance enabling purchase of autos, education scholarships, and help to the flood affected victims. Okay. What's the discussion done between the boards? There are various projects where they're going to continue, which is the legacy project. What are the new initiatives? There are various projects today discussed, the hospitals, universities, colleges, and we'll see how we can support them. Okay. Outcome of this meeting, sir? Outcome of this meeting is very positive. They're doing a wonderful work, and we will continue. WMO Central, body will continue supporting them as much as we can. Okay. North India chapter is led by our very active Vice President Esanda, and they got a very good team, and mashallah, they have really done marvelous job in the since last AGM which took place in Ras Al Khaimah in UAE. So what do you feel about Voice of MEMON Media? It is a good voice for the MEMONs, brings a lot of awareness for all the great work being done in North India chapter and worldwide. Thank you. अस्सलामुअलैकुम। आज वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ इंडिया चैप्टर की रीजनल कमेटी की मीटिंग थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में 2 इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए थे। हारून करीम भाई जो हमारे साथ में इधर है वो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्ट के बोर्ड के चेयरमैन हैं और उनके साथ में उनके डेप्यूटी चेयरमैन अशरफ सत्तार भाई भी इधर थे। उनसे हमारे को काफी गाइडेंस मिला और जो इतने प्रोजेक्ट्स WMO ने आज लेके रखी है एहसान भाई और हसीन भाई के अंडर में जो ये लोग रन करते हैं, एहसान भाई एज ए प्रेसिडेंट, उसको कैसा स्ट्रीमलाइन करने का, कौन से प्रोजेक्ट पे फोकस करने का और लेगेसी प्रोजेक्ट कौन सा लेने का। अभी इसमें कुछ रेगुलर डे टू डे के प्रोग्राम्स तो हमारे होते रहते हैं, जो मैरिज काउंसिल का है और दूसरे जितने भी जिसकी एक पूरी लिस्ट बनी हुई है वो डे टू डे हमारी कमेटी हैंडल करी है। बट आज का जो मेजर फोकस था कि लेगेसी प्रोजेक्ट हम लोग उसको आगे कैसा फर्दर लेके जाए। लेगेसी प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जैसा उम्मीद फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है जो स्पेशल चिल्ड्रंस का है, स्कूल का मैनेजमेंट नवी स्कूल को बनाने का और उसको करने का, उसको उसके फंड्स रेजिंग हम लोग कैसा करेंगे, इंटरनल हम लोग अपने आप को कैसा उसको कल्टिवेट करेंगे कि एक प्रोफेशनल लेवल पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलावे। और एक जो न्यू प्रोजेक्ट आया है हमारे पास पालघर हॉस्पिटल का, उसको हम लोग अंजाम तक कैसा लेके जावे, जो लगभग $3 मिलियन का प्रोजेक्ट है। तो इससे हमारी वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल बॉडी से भी बात हुई है या हमारे कुछ डोनर्स है, वहां से हमारे पास क्या फंड आता है उसको लेके प्रोफेशनल मैनेजमेंट में कोई भी चीज हम अधूरी कराना चाहते हैं, सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम का हमारे साथ में सपोर्ट है और आज की मीटिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हुई है। थैंक यू। मेरा चश्मावाला डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ WMO, जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट बाहर से आए, हारून करीम बा ऑल द वे फ्रॉम दुबई, ही इज चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, एंड हमारे अशरफ सत्तार भाई जो ही हैज कम ऑल द वे फ्रॉम श्रीलंका, ही इज डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। They are very distinguished and I have known them since years, and they are like a strong pillar of WMO organization. And they, I will just tell you, for them, they work for the cause and not for the applause. They live life to express and not to impress. They do not strive to make their presence noticed, but they strive to make their absence felt. जब भी हमारे को कुछ प्रॉब्लम होता है तो उनको बहुत ही पेशेंटली, दे वेरी केयरिंग, लविंग, अंडरस्टैंडिंग, और ऑलवेज दे स्टैंड बिसाइड अस। तो हम लोग तो चाहते हैं कि मेरा तो फ्यूचर प्रेडिक्शन यही है
we should have such type of person as the president of WMO in future, because we believe in them, we stand beside them, and they also just stood beside us in every problem. Ishan Bhai Gadawala, very active, and we are very much motivated, guided, and inspired by him. He is inspiring so many people from our community, and within 6 or 8 months, he has done so much that nobody has done in 7 or 6 years. He's going in a very fast speed, but very carefully also, and very systematically. So we give full credit to him for the WMO North India chapter.